हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी कॉम्ब का लेसन 4th, जिसका नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इस वीडियो में हम लेसन की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको थर्ड पोयम द शेड करवाई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ की समरी करेंगे। In the old days of the Daimos, there lived an old couple who had a pet dog named Muku. Having no child, they cared for Muko as a human child. Muko, in turn, loved them back like a being soul with a soul. One day, when the old man was feeding the white heron, the dog ran up to him and tried to take him to a particular spot in the garden. At first, the old man just thought the dog was playing with him, but after a while he followed to the spot. The dog began starching the ground as if a bone or a fish were buried in the ground. The old man brought out his hoe, struck in the on the spot, and found gold. Hence the old couple began rich. They enjoyed a lot and even shared their fortune with the poor people. There also lived a couple who were wicked and cruel. When they got to know the old couple fortune, they coaxed the dog into their house and offered him food. However, the dog knew that how cruel and insensitive the couple were, and he neither ate or nor moved. Then they dragged out it in their garden while carrying a hoe and spade with them. As they reached the pine tree, the dog began to paw and scratch the ground. The greedy couple, thinking that a mighty teaser must be buried, started working immediately. However, they found a dead kitten. Losing their tempers, they beated the dog to death and threw his carcass in a hole and buried him. When the old man got to know the news of his pet's death, he mourned for him and went at night under night and paid his respects. That night, as he was sleeping, the spirit of dog came in his dream and told the old man to cut down the pine tree and make a mortar and a mill from it. The old man did as he was told to do. The worked hard and finally made the mortar and the mill. As the new year come nearer, he wished to use the mortar and mill to make rice pastry. With the help of his wife, he pounded the rice. When the old woman took the mill and began to grind the bean, heavy gold coins started falling from it. Again, the old couple had become rich. Meanwhile, the wicked couple were spying on them. They wanted the mortar and the mill, so they borrowed it from the old couple the next day. As soon the old man began to pound the rice and the old woman began to grind the rice and beans turned into worms. The wicked man turned angry and destroyed the tools and used the broken pieces as firewood. Not only after that, the old man had another dream. The dog spirit came and told his owner to take the ashes of the burnt mortar and mill and sprinkle them in the withered tree, make them bloom. The old man woke up and went to the wicked couple's house. He humbly asked for the ashes. The couple treated him with contempt but let him fill his basket with the ashes. When he returned home, he took his wife to his garden where their cherry was withered as it was winter. The old man sprinkled the ashes on the tree and saw that the tree was full of blooming cherry blooms.
Everyone got to know about this and everyone went to see this wonder. The wicked couple also got to know this story and gathered all the remaining ashes and keep it safe. Meanwhile, the kind old man heard that the Daimos was to pass along with high road near the village. He took his basket and set off to see him. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Even though, according to the customs of the time period, he was supposed to lie down, he was standing. However, the guards didn't object, seeing that he was an old man. As the daimyo's planning queen drew nearer, he sprinkled some of the ashes on the withered cherry bloom, the tree which made it bloom. The daimyo was delighted to see this and stopped the van, calling the old man to him. He thanked him and ordered present of silk robes, sponge cake, fans, and the other rewards to be given him. He even invited him to castle. The old man went home happily to share this news with his wife. However, the wicked neighbor who heard this story took some of the magic ashes and went out on the highway. He climbed a cherry bloom tree, and when a handful of ashes which didn't do anything, instead they fell on the daimyo, and when the wind blew, the ash flew into the daimyo and his wife's eyes and noses. They sneezed and choked, which ruined the dignity and elegance of the procession. The man was brought down from the tree and beaten to death. Meanwhile, the kind old couple lived a prosperous life. अब हम करते हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मार डाला? इसका आंसर है द ग्रीडी कपल वांटेड टू गेट गोल्ड बट द डॉग शोड देम द स्पॉट वेयर अ डेड किटन ले बरिड इन अ फिट ऑफ एंगर दे किल्ड द डॉग। लालची दंपति सोना प्राप्त करना चाहता था, परंतु कुत्ते ने उन्हें वह स्थान दिखाया जहां बिल्ली का एक मृत बच्चा दबा था। गुस्से में आकर उन्होंने कुत्ते को मार डाला। इसका एस्से टाइप आंसर देखते हैं। देयर लिव्ड अ काइंड ओल्ड कपल इन अ विलेज। देयर नेबर्स वर विक्ड एंड ग्रीडी। दे बिकम जेलस ऑफ द गुड कपल। दे वांटेड देयर डॉग टू फाइंड अ टीजर फॉर देम। They coaxed the dog into their garden, but the dog showed them the spot where a dead kitten lay buried. In a fit of anger, they killed the dog. एक गांव में एक दयालु वृद्ध युगल रहता था। उनके पड़ोसी दुष्ट और लालची थे। वे नेक युगल से ईर्ष्या करने लगे। वे चाहते थे कि उनके पड़ोसी का कुत्ता उनके लिए खजाना निकाले। वे कुत्ते को फुसलाकर अपने बगीचे में ले आए, परंतु कुत्ते ने उन्हें वह स्थान दिखाया जहां बिल्ली का एक मृत बच्चा दबा हुआ था। क्रोध में आकर उन्होंने कुत्ते को मार डाला। क्वेश्चन 2, मार्क द राइट आइटम्स। फर्स्ट, द ओल्ड फार्मर and his wife loved the dog. Option A, because it helped them to in their day-to-day work. Option B, as if it were their own baby. C, as they were kind to all living beings. इसका आंसर है ऑप्शन बी एंड सी। सेकंड, when the old couple become rich, they option A gave the dog better food. Option B invited their greedy neighbors to a feast. Option C lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. इसका आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड, the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make option A the rice pastry and bean sauce. B magic ash to win rewards. C a pile of gold. इसका आंसर है ऑप्शन सी। Question 1, the old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? वृद्ध किसान एक दयालु व्यक्ति है। पहले दो अनुच्छेदों में आपको क्या प्रमाण मिलते हैं? इसका आंसर है द ओल्ड फार्मर हैड अ लिटिल डॉग नेम मुको। ही लिव्ड इट लाइक हिज ओन बेबी।
He fed the dog with small pieces of fish and boiled rice. He was patient and kind to all living things. This shows that the old farmer was a kind person. वृद्ध किसान के पास म्यूको नाम का एक छोटा सा कुत्ता था। वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। वह उसे मछली के छोटे छोटे टुकड़े और उबले चावल खिलाता था। वह सभी जीवधारियों के प्रति धीर और दयालु था। इससे पता चलता है कि वृद्ध किसान दयालु व्यक्ति था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द डॉग डू टू लेट द फार्मर टू द हिडन गोल्ड? कुत्ते ने किसान को छिपे सोने तक ले जाने के लिए क्या किया? इसका आंसर है द डॉग वेंट रनिंग टू द फार्मर। ही पुट हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनड विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। इट वॉज द प्लेस वेयर द गोल्ड वॉज हिडन। कुत्ता दौड़ता हुआ किसान के पास गया। उसने अपने पंजे से उसकी टांग पर रख दिए और अपना सिर हिलाकर पीछे किसी स्थान की ओर इशारा किया। इसी स्थान पर सोना छिपा था। इसका ऐसे टाइप आंसर देखते हैं। द ओल्ड राइस फार्मर्स पैट डॉग ऑलवेज accompanied him to the fields. One day the dog came running to the farmer. He put his paws against his legs and motioned with his head to some spot behind. He kept on whinnying and running to and fro for some minutes. He then led the farmer to a spot. There he began stretching the spot with his paws. The farmer dug the spot. He was surprised to find gold in the pit. चावल की खेती करने वाले किसान का कुत्ता सदा उसके साथ खेतों में जाता था। एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ किसान के पास आया। वह उसकी टांगों पर अपने पंजे रखकर अपने सिर को पीछे किसी स्थान की ओर इशारा करने लगा। वह कुछ मिनटों तक भौंकते हुए दौड़ता रहा। उसके बाद वह किसान को लेकर एक स्थान पर गया। वहाँ वह उस स्थान को अपने पंजों से खुरचने लगा। किसान ने उस स्थान को खोदा। गड्ढे में उसने सोना पाकर वह हैरान हो गया। क्वेश्चन 3, फर्स्ट, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? कुत्ते की आत्मा ने किसान की पहली बार सहायता किस प्रकार की? इसका आंसर है फर्स्ट, द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर गेट अ फुल टब ऑफ डॉग। पहली बार कुत्ते की आत्मा ने सोने से भरा टब प्राप्त करने में किसान की सहायता की। सेकंड, हाउ डिड द इट हेल्प नेक्स्ट? अगली बार उसने उसकी सहायता कैसे की? इसका आंसर है नेक्स्ट द फार्मर मेड अ ड्राई चेरी ट्री ब्रस्ट इनटू ब्लूम्स। दिस हैपेंड व्हेन ही stretched a pinch of ashes on the tree. The farmer was richly rewarded for this wonderful act. अगली बार किसान ने एक सूखे चेरी के वृक्ष पर फूल खिला दिए। ऐसा तब हुआ जब उसने चुटकी भर राख वृक्ष पर बिखेरी। इस अद्भुत कार्य के लिए उसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन 4, वाई डिड द दियामो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट? डेमियो ने एक ही कार्य के लिए किसान को पुरस्कार दिया परंतु उसके पड़ोसी को दंड क्यों दिया? इसका आंसर है डेमियो अंडरस्टूड दैट द फार्मर वॉज प्योर एट हर्ट वाइल हिज नेबर वॉज ग्रिडी. दैट इज वाई ही रिवॉर्डेड द फार्मर बट पनिश द नेबर. डेमियो समझ गया कि किसान मन का साफ है जबकि उसका पड़ोसी लालची है। इसी कारण उसने किसान को पुरस्कार दिया परंतु उसके पड़ोसी को दंड दिया। अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, द नेबर्स होप्ड दैट द डॉग वुड फाइंड फॉर देम। ऑप्शन ए टीजर्स, ऑप्शन बी डायमंड्स, ऑप्शन सी मनी, ऑप्शन डी ज्वेल्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए टीजर। Question 2, instead of the teaser they found option A a box, option B a dead kitten, option C a snake, option D a bag. इसका आंसर है ऑप्शन बी a dead kitten. Question 3, the farmer was lovable as option A he was kind, option B man could ever be, option C the dog gave him gold, option D the neighbors helped him. इसका आंसर है ऑप्शन A he was kind. Question 4, when the pastry was ready, option A it turned into gold coins, option B it got burnt to ashes, option C the fireplace was clean and tidy, option D the neighbors called him. इसका आंसर है ऑप्शन A it turned into gold coins. Question 6,
Thus the mill was turned, option A, into ashes, option B, upside down, option C, to hit it hard, option D, into pieces. इसका आंसर है ऑप्शन A, into ashes. Question 7. The dog spirit hunted him. The word means option A, troubled, option B, followed, option C, advised, option D, killed. इसका आंसर है ऑप्शन A, troubled. Question 8. The high road near the village was in the news because of option A, the new construction, option B, the grand celebration there, option C, the visit of Diamo, option D, its renovation. इसका आंसर है ऑप्शन C, the visit of Demio. Question 9. Demio was delighted to see, option A, the cherry tree blossom, option B, the old man, option C, the cherry tree, option D, the ashes. इसका आंसर है ऑप्शन A, the cherry tree blossom. Question 10. The dog's master, option A, got the gifts, option B, was invited to the castle, option C, was thanked by the king, option D, all of the above. इसका आंसर है ऑप्शन D, all the above. Question 11. The greedy neighbor, option A, got the reward, option B, was invited to the castle, option C, was beaten to death, option D, ran away out of fear. इसका आंसर है ऑप्शन C, was beaten to death. Question 12. The moral of the story is that no one should not be, option A, short-tempered, option B, selfish, option C, jealous, option D, kind. इसका आंसर है ऑप्शन C, jealous. Question 13. The dash of the old couple was responded well by the dog. Option A, misery, option B, love, option C, wealth, option D, healthy. इसका आंसर है ऑप्शन B, love. तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है. अगली वीडियो में मैं आपको 4th पोएम चिवी करवाऊँगी. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.